Right, so welcome to the 11th lecture on signals and systems. Last time हमने question posed किया था, which I said is probably the most important question of this topic or field, signal and system. Right? So क्या था question? याद है किसी को? सर हम किसी एक आर्बिट्रेरी एलटीआर सिस्टम को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग आर्बिट्रेरी इनपुट्स. So we want to know the output of an arbitrary system, right, for an arbitrary input. Arbitrary here we mean कि हमें उसका physics या उसकी chemistry या जो होता है ना first principle उसका model नहीं है हमारे पास, right? Black box है वो हमारे, yeah. We have studied it in some other ways और वही हमने find out करना है. So I say that this is a system. I don't know its exact physics, chemistry, biology, whatever this system is behaving like. I have some other information. वही हमने देखना है क्या चाहिए होगी. But what I want you to do is to tell me if I give a certain input. Let's say I give it a sinusoid. What's its response? Let's say I give it an impulse. What's its response? Let's say I give it a unit step. Then what? Let's say I give it a train of pulses. Pulse trains बहुत यूज होती है systems में. What will its response be? Yeah. How do I model this thing such that I am always able to respond what is it here without having to write the whole physics, chemistry or whatever basic principles of that system. And I gave you the hint last time that we will divide our problem into smaller sections. Yeah. So this is a whole class of systems, and within that we will limit ourselves to a subclass which is by no means small. It's a huge class. Okay, it is LTI, and we have previously discussed somewhat about how to define linearity and time invariance in a system. So, and I've also mentioned before that it's not just the tools you develop are applicable here. Okay, they are also applicable in a lot of these problems. How? You consider systems to be locally linear, and in short time spans they can be considered time invariant. A lot of systems ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है? So then the tools we develop will actually be useful even here. हमेशा नहीं. There are highly nonlinear systems where the tools you developed here are almost useless. There are highly time varying system where the tools developed here are almost useless. But still there is, let's say, a huge subsection here where the systems are either nonlinear or time varying, but you can apply the tools learned here on small segments or small time segments or operational segments of the process. So I'll mention that maybe a while later. For now, that's our question. Now what do? We rephrase our question. Yes. So we say, okay, how do you tell the output of an arbitrary LTI system to an arbitrary input? What should be the formula here? ये हमने देखा. Yeah, and that formula should include some behavior of this guy and of course the input. Yeah, the behavior that it includes, I don't want it to be based on the physics, chemistry, biology, whatever the system is coming from. अगर वो आप कर सकते हैं, mostly you can make differential equations, lots of big sets of equations. I already mentioned that. वो आप पढ़ते हैं कैलकुलस में, सारे इंजीनियरिंग मॉडलिंग में वो सारा कुछ यूज़ होता है. But a lot of that leads to extremely difficult differential equation systems which are very hard to solve. Okay, so a big chunk of what we do is based on this. एक मिसाल देता हूँ. Let's say this system, you call your friend. Yes, तो क्या होता है कॉल की जो electromagnetic waves जाती हैं. Yes, they go यहाँ से कहाँ जाती है, मोबाइल से आपके टावर पे जाती हैं.
टावर आगे डिपेंडिंग ऑन वेयर योर फ्रेंड इज किसी और टावर को थ्रो करेगा, फिर वो अब आपका फ्रेंड कहाँ है, मे बी इन लाहौर इन अ मॉल और समथिंग, या वहाँ और भी बहुत से लोगों की कॉल्स आ रही हैं. इमेजिन now consider that as a system, yeah, and imagine thinking that you will now trace the exact physics of this electromagnetic wave. कर सकते हैं? लंबा काम लंबा काम है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल काम है. कर सकते हैं वैसे बाय, लेकिन the materials here, यहाँ से जो रेज निकलनी है, how much will they reflect, how much will they allow to pass, what are the weather conditions outside, how far are you from the base station, how busy is the radio base station, right? फिर उसने थ्रो करनी आगे, उसी क्या है, फिर आपका फ्रेंड मॉल में किसी दुकान में जा रहा है, नहीं जा रहा, इंटरफेरेंस आ रही है नहीं आ रही. इफ़ यू सिट डाउन एंड राइट मैक्सवेल इक्वेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पढ़ लिया आप लोगों ने या पढ़े हैं? पढ़ना है चले. यू नो मैक्सवेल इक्वेशन तो पता है ना आप, बेसिक जो होती हैं लाइट वगैरह की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की. सो इफ़ यू सिट डाउन एंड राइट दोज, you will go crazy. And the funny part is this, as soon as you have written all that, आपका दोस्त पार्किंग में चला जाता है, सारी फिजिक्स चेंज हो गई. ठीक है, फिर लिखे बैठ के, फिर सॉल्व करें उसको, तो आपकी तो कॉल नहीं होने लगी है. सही है, इट्स गॉन. सो दैट इज व्हाट मोटिवेट्स दिस ह्यूज फील्ड, and that is actually, again I mentioned, that has led this field to develop into the field of machine learning and neural networks. वो इसका फिर अगला लेवल है थोड़ा सा, बट प्रिंसिपल यही है उसका भी. वो भी उसमें नहीं पढ़ता एक्चुअल फिजिक्स क्या है उसकी, एक्चुअल केमिस्ट्री क्या है. इट ट्राइज टू अवॉइड दैट बिकॉज इट बिकम्स एक्सट्रीमली cumbersome, computationally expensive, नॉन अडॉप्टिव, क्योंकि आपकी फिजिक्स बार बार चेंज हो रही है. सो योर मोबाइल्स don't use that basic physics, they use these kind of techniques. Okay, और उसमें कुछ help हम उसकी करते हैं through sending a pilot or something, but still what they use are these techniques. इनके advanced version है, कुछ cases में यही version है, but that speaks to the power of what you are learning here. Yeah, so let's see that then. How can I give the output? So we restricted ourselves to LTI. Now we will further restrict ourselves to discrete time LTI for now. In this course we will cover both, yeah, LTI systems in discrete time and continuous time. But as I mentioned, I will do everything first in discrete time case because it's easier to follow. Yeah. Then the exact same concept will analogously apply to continuous time. So now our question is, how do you tell the output of a arbitrary discrete time LTI system to a discrete input? अब हमने थोड़ा सा और restrict कर लिया था to discrete input, discrete system, meaning we are talking about discrete input and discrete output. So before we answer that question, since we are restricting ourselves to LTI systems, discrete time LTI systems, it's good to be able to identify when is a system a discrete time system, when is a system an LTI system. क्यों जरूरी है? Because if you're not able to identify, how can you tell, do these tools, does this answer hold for my system or not? आपने किया है, problem है, उसको आपने हल करना है. You know the tools available for LTI systems, but first you have to identify, is my system LTI or not? Yes, if you cannot identify that, how can you say that this solution will apply here? गलत जगह apply कर देंगे. So discrete time system तो easy है, you know by now. So how do you tell if a system is discrete time? Input and output. Yeah. So if its input is discrete and outputs are discrete, so that's a simple understanding of the system. But how do you tell if a system is LTI? So we briefly did that, right? We checked how to see. So I will repeat that here with specific formulas, and we will solve a few or consider a few cases. Why are we doing that again? Because not for the sake of exams or making a problem to identify the system, is it linear, is it time varying? No. Why we want to do it? Because
We want to know, do the tools available for LTI systems apply to my problem or not? I have formulated this problem, or I've been given this problem. Problem से मुराद exam वाली problem की बात नहीं कर रहा. Actual problem. You want to be able to identify behavior of a system, remove interference from a signal you have received over, let's say, Wi-Fi or something. ये भी एक problem है. So all of that requires that you identify what are LTI systems. So क्या थी जी linearity की definition क्या थी? System that is both homogeneous and additive. Superposition. Yeah, superposition. So if it allows superposition. Superposition means, what does it mean? In basic mathematics it's like this. It says that if f of x1, let's say, yeah, a function operating on x1 is, let's say, f of x1 is g1, let's say, and f of x2 is g2, then f of alpha x1 plus beta x2, the function operating on their scaled sum. यही है ना? इसको हम उसकी superposition कहते हैं. If that is equal to what? Alpha G1. Alpha fx1 plus beta fx2. Yeah, yay. It's almost like saying that the function is separable. दोनों terms पे अलग-अलग apply हो जाता है. Not every function allows that, है ना? Cosine यहाँ रख के देखें, ऐसे तो नहीं होता ना? हो जाता तो बड़ी आसान हो जाती trigonometry. Right? Cosine alpha plus beta की तो अच्छा सा लंबा formula है. It's not cosine alpha plus cosine beta. Right? Because we know it's a non-linear function. So, if that happens, what just happened? The function applied to the two inputs separately here, and the scaling was exactly the same as you gave in the output. Yeah. So then, so another way of saying is that if it is equal to alpha g1 plus alpha beta g2, I'm putting a question mark here, meaning if this holds, then the system is linear. If you find that nope, you found an inequality, the two weren't the same, then you found that the system is actually non-linear. Yeah. Now let's rewrite this in terms of systems. The only change that occurs really is that we replace f by capital S, special S, like this. This system. Yeah. The system is an operator now. Just like a function f was an operator, the system is an operator. So let's say I have done this. I sent in one input x1n and I got an output y1n, and the system is this thing. Yeah. So y1n is the system operating on x1n. The system operated on this and gave me y1. Yeah. Then I gave it another input to the same system and got another output, which I am going to call y2n, and it was system operating on x2n. The question for linearity is this: what happens if I give this system as a mixture of these two? So I give it alpha x1n plus beta x2n. If this goes into the system, now what is the output of the system? Okay, so for linearity, what do you want the output to be? Alpha x2n. Alpha x1n, yes? Yes. S operating on it, yeah? Or you could have y1 here. Depending on, so S operating on this plus what? Beta S operating on x2, and which can also be written, if you have already named these, you can say it's alpha y1n plus beta y2n. Agreed? ऐसे ही है. So this is the simple test
that you need to perform to see what happens. Now if I draw this in a different way, you could see that it's saying that the system is operating, it's like the system operating first and the addition happening later. These two are interchangeable. This is another definition of linearity. You agree with that? The addition and the system are interchangeable. Yes. Right? Why is that? Because let's say if you apply the system first and then you add these, then you get this thing. So now to make it simpler, how इक्वेशन कैसे है आपकी इक्वेशन ये वाली नीचे वाली ये वाली, this is sx1n is y1n, we already named it, नहीं तो हमने उसको output को एक नाम दिया हुआ. So now how do you test linearity then? Very simple. First step, get the output of one of these, write it as either this or this. Yeah, get the output of another one, just general x to n, कोई specific यानी रखनी value. Yeah, and get this thing. Yeah, then multiply them with different factors, add them and pass that through the system and see if the output you get is the same as not the input but a simple sum and scaling of the input, right? So we will draw three cases, three examples to bring that home, but that will help you see. Let's do one example, very simple. Let's say this system is a cosine system. Let's say it does cosine x, whatever you give it, it does that. Okay, so the operator is cosine x n. Yeah, so how do you test if it is linear or not? So basically first step, what do? You say, okay, first I will pass an x1 through it. So when you pass x1 through it, what do you get? Cos x1 n. Now pass an x2 n through it, what do you get? Call that y2 n is cos x2 n. Yes. Now pass alpha x1 n plus beta x2 n through that system. Don't look at this for now. Pass this through here and see what do you get? Cos 4 into cos. Cos of whole of it. Alpha x1 n plus beta x2 n. Yes. Now ask yourself, can I write this? I'll try to expand it. Yeah. And ask yourself, can I write this equal to alpha times the first one? What was the first one? Plus beta times the second one. वो तो अभी नो तो आया, अभी तो पहले क्वेश्चन पोज करें. This is what you have. ये तीन स्टेप है, समझ आ रही? If you follow these, you will always be able to tell if a system. अगर आप शॉर्टकट ट्राई करेंगे यार तो थोड़ा मुश्किल होगी आपको, right? So what do? You pass one input through it, get the, and we're not putting any specific input. कोई impulse, कोई sinusoid कुछ नहीं डाल रहे. Just any x1 n, any x2 n. Then pass their scaled sum, their superposition through the system. Get the output. Now ask yourself, can I rewrite this as alpha times this plus beta times, because यही है ना definition linearity की. Yes. अगर आप लिख सकते हैं तो fine. अब इस केस में it's very obvious, right? You cannot write it like this. Yeah. And by the way, superposition always requires that alpha and beta cannot be simultaneously zero. Okay, वो फिर trivial case आप बना देंगे. If you're not actually doing a superposition. If you make alpha 0, beta 0, so they together they can never be 0. Then you're not actually doing a superposition.
ओके सर ये सिंस वी आर वर्किंग ऑन आर्बिट्रेरी इनपुट, तो आप कुछ भी डाल सकते हैं, इम्पल्स या कुछ भी होना। हाँ उसमें डाले नहीं हमने तो। अभी तो नहीं डाला, लेकिन लेट्स से हम एग्जांपल ले लें कि ऐसा सिस्टम हो जो किसी इनपुट के लिए लिनियर हो, किसी के लिए ना हो, तो सिस्टम को फिर हम लिनियर नहीं कहेंगे ना। नहीं, इट हैज़ टू बी फॉर एनी ऑल के लिए, जैसे टाइम पीरियड का था ना, ऑल इनपुट्स। इट हैड टू होल्ड फॉर ऑल स्मॉल टी, बिल्कुल सर, जनरल तो है ये। कोई कई सिस्टम्स के बड़े स्पेशल केसेस आ जाते हैं, डिजेनरेट केस भी आ जाते हैं, जहाँ पे आपको लगेगा कि अच्छा ये तो हो रही है, राइट। बट नोटिस वी डिडंट पुट एनी वैल्यू फॉर अल्फा और बेटा, only the condition is they shouldn't be simultaneously 0, yeah, and we didn't put any actual values of the signal. That is the power of linearity. Is a very general thing, it's just testing the function. Function अब क्या है आपका system है, right? So now try this approach on, आपको मैं एक system देता हूँ, उस पर आप ट्राई करें। Let's say the system is not cosine xn. Let's say the system is defined as axn. ये सिस्टम है। ये सिस्टम है। What does that mean? सिस्टम का ये बिहेवियर है। That means or let's say I can write it that sxn equals axn, right? So what happens if you give it x1n, what should you get? AXN. ax1n. If you give it x2n, what should you get? ax2n. ठीक, तो अब ये तीन स्टेप्स जरा अप्लाई करें इसको। I think it is है linear है। है तो सही, लेकिन मेरा मकसद सर ये स्टेप्स आपके क्लियर कराने, क्योंकि इजी केसेस पे तो आप, मैं भी बता सकता हूँ, कोसाइन का हमें नज़र भी आ रहा था वैसे बात, लेकिन ये जब केसेस थोड़े से कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं ना, फिर आपकी इंट्यूशन काम नहीं करती, वहाँ थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर काम आता है, राइट। तो ज़रा स्ट्रक्चरली करें इसको। आई वांट टू सी क्या कंक्लूजन निकालते हैं आप, और कंक्लूजन से ज़्यादा आई वांट टू सी if you actually see this happening, right? So what are the three steps? कोई एक इनपुट दें इसको, x1n कहें, फिर x2n कहें, then send their superposition to it. Whatever output you get, try to write that superposition, or try to write that output as a superposition of the previous two outputs, right? Alpha y1n plus beta y2n आता है कि नहीं? अगर आ रहा है तो इट्स लीनियर, नहीं आ पा रहा नहीं है linear. So x1n का क्या है आउटपुट? So AX1 linear है। लिख लिया आपने? linear है सर, सेम और x2n का AX2 ठीक है, और अल्फा x1n प्लस बेटा तो x2n वो का A ब्रैकेट के अंदर सब आ जाएगा, A पूरे से multiply। पूरे से मल्टीप्लाई होगा। अब उसको आपने रीराइट करना है। A सेपरेट हो सर, हाँ, हो रहा है वो। हो रहा है क्या सेपरेट टर्म्स बनी है? सर। AX1n प्लस AX2n वही अल्फा बेटा कहाँ गए? सर, वो डिपेंड करता है अल्फा AX1 and बीटा वो भी चाहिए ना, अल्फा बेटा भी चाहिए ना। अल्फा AX1 सर। कंपल्सरी उसके बगैर नहीं हो सकता सर, मैं तो उसके बगैर वो फिर एडिटिव हो जाएगा सिर्फ, होमोजेनिटी भी देनी है। दोनों एक ही उन्हें देख रहे हो, मैं अलग अलग देख रहे हो। मैं दोनों अलग अलग देख रहा वो आप इकट्ठा है, एक ही देखना अच्छा है, फास्टर है ना। सर Homogeneity भी स्केलर test प्रोडक्ट तो है ना उसमें, तो वैसे भी मल्टीप्लाई होगा तो हाँ बस ठीक, फर्क नहीं है। वो हो जाएगा। अच्छा, अब आप टेस्ट करें। Let's say I change the system and I say the system is AXN plus B. Yes, AXN plus हाँ जी, अब जरा करें। आप अभी
उसमें रोमन ग्रीक मोड, सॉरी ग्रीक रोमन मोड में आ जाए। रिकॉर्डिंग जो हो रही है हमारी लास्ट की रिप्लेस में हो रही है एंटी हेलेनिक। अगर ये वीडियो स्वीडन तक जा रही है तो पॉसिबल है। हिस्ट्री क्लास भी साथ है अदरवाइज इनपुट को ऐड करना इसी में डाल देते हो, ये हो जाता है तो ये हो जाता है तो ये हो जाता है तो ये हो जाता है। 3 स्टेप्स क्लियर है? हैं? नहीं फिर जवाब से क्लियर नहीं है या प्रोसेस क्लियर है? नहीं सर ये लीनियर नहीं है। एक मिनट वो क्लियर कर देते हैं। फिर ये आप करेंगे s ऑपरेटिंग ऑन अल्फा x ऑन n प्लस बीटा x टू n यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। बस भाई अब तो AI नहीं जाना है। सर सेम तो नहीं लगा नहीं सर नॉट सेम तो नहीं लगा क्या चीज़ काम कर रही है? सर प्लस बी अलग वो होगा ना प्लस तो 2b आ रहा है तो सर प्लस सी b के आ साथ रहा है। सर वो वो बी b का का पता पता है नहीं है। इसको Linear नहीं है। इसको खोल लो ना तो अभी पता चलता है एनी अदर थॉट्स? अच्छा वो जो आप कह रहे हैं ये स्टेप क्लियर नहीं, आखिर ये देखें इसको मैंने थोड़ा और इजी कर दिया आपके लिए। कौन सा ये नाम क्या है? हाँ ऐसे लिखें, ठीक है। फिर ये तो यहाँ तक तो सिंपली ये कह रहा है कि सिस्टम अप्लाइंग ऑन दी होल थिंग, राइट। देन आस्क योरसेल्फ कैन आई एक्सपेंड दिस टू मेक दिस, ओके। ये करना आप does it expand into alpha y1n plus beta y2n where you already know what is y1n and y2n, right? थोड़ा सा उसको वैसे शक्ल से तो ये एक लाइन की इक्वेशन है। exactly. वो So ये linear नहीं है। so a linear curve does not necessarily lead to a linear system. Okay. So yeah, it is non-linear. Why? Let's see. Let's do our first step. What's our first step? It's saying a x1n plus b. Yeah. yes What is our second step now? A x2n plus b. Yes. Our third step is going to say, okay, let's apply this to the whole system, which is or this whole thing, which is going to be a times this whole thing, yes, alpha x1n plus beta x2n plus b. आप में से बहुत से लोग दोनों में b ऐड करेंगे, नहीं वो गलत है ठीक है। हाँ सोच रहे थे आप। कोई कोई करेगा, तलहा करेगा बाकी नहीं, लेकिन अब नहीं करेंगे होपफुली। यस, so you have to be very clear, and I always tell my students that just imagine this is a box. So you are saying a times box plus b. अब बॉक्स में आप 1000 टर्म्स रख दें, 1000 टर्म के साथ तो b ऐड नहीं होना, हर एक के साथ सबके साथ एज अ होल ऐड होना है, ऐसे ही है ना। दिस फॉर्मूला you should see it as a box plus b. What is box? You provided the input. Yes, box आपने provide करना है x and okay. Now तलहा इससे आगे यहाँ तक तो सिंपल लिखा है, एक्चुअल टेस्ट अब शुरू होता है। Can you rewrite this as alpha times this, which is what? Alpha times a x1n प्लस बी plus b के साथ अल्फा में मल्टीप्लाई होना है नहीं होना है होना है अल्फा टाइम्स हाँ सबके दोनों टर्म्स के साथ अल्फा b प्लस बीटा
a x1n plus बेटा भी beta b. Yes? सर बी के साथ नहीं b के साथ नहीं होगा, सॉरी नहीं होगा सर, नहीं होगा। ठीक कह रहे हैं, b के साथ नहीं होगा ये, because if you send in alpha x1n it will just be alpha x1n. Yeah, okay, fine. Now the question mark tells you नहीं सर, लेकिन जो चीज़ मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपने वेरिएबल के साथ, हम तो ये देख रहे हैं ना कि क्या आंसर में भी वो फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा, फंक्शन भी उसी स्केल अप हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो वो पूरे फंक्शन से नहीं मल्टीप्लाई होना चाहिए। अल्फा तो सर दोनों से सिर्फ खाली इनपुट होमोजेनिटी में x को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो अभी आप फंक्शन को आउटपुट को नहीं कर रहे हो। let's agree on this one, it's fine, let's agree on this one. If I put alpha x1n here, what do you expect? पहले उसको क्लियर कर लो। यहाँ पे तो वो यहाँ पे सिर्फ- आएगा नहीं, यहाँ पे b से मल्टीप्लाई नहीं होगा ना, नहीं होगा। अच्छा, अब हम जो चाहते हैं वो क्या है, अल्फा y1n, यस, और बेटा y2n। तो हाँ ये ठीक कह रहे हैं यार, सर यही चीज़ में आप- ये हमें लानी है, सारे से करना राइट, पड़ेगा पूरे से करना पड़ेगा, ठीक। सो वी वांट अल्फा टाइम्स y1n, y1n in this time, in this case was this thing, so you get this here, it's fine. बेटा सर सर तो फिर अल्फा और बीटा सर, पूरे बीटा के साथ होगा ना, खाली ए के साथ तो नहीं? कर दिया ना, नहीं ऊपर वाली equation। जो भी दोनों केस में no, नहीं, हम स्केल अप तो नीचे कर रहे हैं ना, उधर तो अल्फा it's डालेंगे। here that we want to see, right? सर तो जो वो ऊपर इक्वेशन है वो तो नहीं होगी ना? वो इसलिए उसी का This is y1n, agreed? थर्ड वाली। हाँ, ये वाली, ये तो आपने इसका आउटपुट निकाला है, ठीक। What we want to say is what should it be equal to now for linearity, right? ये आप अग्री करते हैं ये से हम, yeah. Try to write this now. If you agree that y1n is this है, then alpha times this क्या होगा? जो नीचे लिखा है। यही होगा ना, फिर यही आपने टेस्ट कर। Again we are not saying this led to this, we are saying it should lead to this for linearity. पहले से हम लिख रहे हैं, right? And now we will try to see can we get this here or not, right? और वो आपको नजर आएगा, so that's not gonna happen. You will have a alpha x1n plus a beta x2n plus b, yes? तो ये terms additional बच जाएंगी, is उन पे इक्वालिटी नहीं आएगी, या? So is there any condition which can make this system linear? तो बी हटा दें हटाने का मतलब मैथमेटिकली माइनस बी माइनस डिवाइडेड बाय बी अरे नहीं यार, नहीं वो तो प्लस में हो जाएगा b equals जीरो 0, जीरो yes? So a proper answer would be this system is non-linear unless यस बी इज इक्वल b equals 0, right? लेकिन usually I don't require that from students, अगर आप नहीं कर पाए, ठीक है, in general it's non-linear, which is a right answer, but one step ahead is to say, think like a mathematician and say, okay, this system is non-linear unless b equals 0, because what happens when b is 0, notice these two annoying terms 0 हो जाएंगे ना, तो you are you will have this thing exactly, this is gone, these two terms are gone, you will have them exactly the same, yes? So then linearity will be proven. Okay, try axn plus bn. Is this linear or not? इंटरेस्टिंग Interesting तो है, linear है। Fine, well exam में लिख दो यार, identify this system as interesting। सर पूल बना Justify दिया your answer। सर मैं वो एक वो ग्रीक गॉड्स के आपने स्टैचूज देखे हैं ना सर वो हाँ इस जी, तरह मैं वो बना दूंगा नीचे प्यारी सी ड्राइंग उसकी बना दूंगा अच्छा, वो ग्रीक सोच रहा है बैठ के थिंकर है जो। यस सर ये सर वही ना थिंकर Thinker बैठ का सोक्रेट एक सोक्रेट्स सोक्रेटिस की है सोक्रेट्स Mostly a general level उनका Thinker थिंकर का। वैसे ही सर वो स्टोइक मीम्स में आया होता है सर हाँ, उस तरह बैठ thinker के है। ये हमारे पास है ना।
ये आज के लेक्चर में उसी मोड में बैठे सर नहीं होगा तो देख ले आई थिंक वो किसी मशहूर का नहीं बनाया हुआ ये सॉक्रेटिस का ही Socrates का ही है है। नहीं, बनाने वाला कौन जूलियस सीजर वो भी कोई होगा माइकलैंजेलो वगैरह नहीं कोई बड़ों में से है माइकल एंजेलो था कोई बड़ों में से बना वो भी उसको इसने भी वो sculpture डेविड बनाया का है। जो स्कल्पचर है डेविड करके नाम है उसका वो तो और है माइकल एंजेलो का ही है वो सबसे मशहूर जो है माइकल एंजेलो तो निंजा टर्टल है। हाँ नहीं, exactly, उसी ने बनाया हाँ माइकल एंजेलो एक पिज़्ज़ा भी खाता है वो। पिज़्ज़ा गटर में रहता है ये देखे ओरिजिनल देखे हुए हैं वहाँ पे अच्छा रोम में हाँ गैस Maybe to Iraq. ग्रीस में ओरिजिनल कहाँ ग्रीस में ही पड़ेगा और काम करता तो नहीं जो माइकलैंजेलो वगैरह की तो इधर है ना इनके चैपल में है ना हम्म। वेटिकन में पड़े हैं ना हाँ जी हो गया AXN प्लस BN क्या आया सो कोई बता सकते हैं पहले का आउटपुट क्या होगा अब इन द न्यू केस 3 steps हैं फर्स्ट स्टेप x1n goes in what do you see outside AX1N plus BN. BN yes for this guy you see BN also. BN also what about when their superposition goes in what do you see A into X1 alpha X1N plus beta. है no मुझे BN. plus BN. BN yes what do we want it to be equal to अल्फा alpha this guy a x1 n plus b n plus beta this guy yes a x2 n plus b n yeah so like before it's very obvious No linear. यहाँ पास नहीं आएगा right Unless B is equal to 0. unless Let's b be या n is equal to 0 या एक ही 0 है n तो n will be changing with time पूरे तो decision n variable so है b B हो सकता is a है। better option here that takes away the contribution of n completely if it's 0 right good so you have learned to test if a system is linear or not ये आपको थोड़ी practice और भी करना पड़ेगी और well आप guess कर सकते हैं वैसे most cases में ना if it's a कुछ इस तरह cosine होते हैं sine वो- हाँ but there can be tricky ones like this guy which is equation of a line but the system is non-linear okay इसकी वजह भी है आप इसे किधर से बनाते हैं हैं? क्विज कहाँ से बनाते हैं ज़्यादातर तो मैं क्वेश्चन खुद ही बनाता हूँ कुछ उनकी इंस्पिरेशन डिफरेंट जगहों से आ रही होती है कभी कभार लेकिन मोस्टली आई लाइक टू मेक माई ओन प्रॉब्लम्स most of us make our own problem right you think about that ये पॉन्डर करेंगे इस इस पे पे ponder पॉन्डर करेंगे Order that right ऐसी मैं खुद ही बनाता ट्विस्ट करता रहता हूँ अपने पुराने प्रॉब्लम्स को या कुछ नया बनाता रहता right just to see your concepts okay रेफरेंस बुक में से भी दिया ठीक है my goal is to make sure कि you feel आपको clear हो जाए कि समझे बगैर आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे that is my goal right अगर आपको ये लगे अगर आप ये लगने लगे कि फलां किताब को देख के या फलां प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करके I'll do well तो वो नहीं है but of course the assignments you do the quizzes you do solution मैं इसीलिए भेजता हूँ
उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम Practice. दोबारा से स्ट्रेंथन करते हैं, थोड़ा सा घुमा के पूछ लेते हैं या उसी तरह भी पूछ लेते हैं, वैल्यूज बदल देते थोड़ी सी कुछ केसेस में. Right, so we have learned to check linearity. Now what about time invariance? How do we check time उसमें पता invariance? लग जाता है. Delay Scaling, का अगर स्केलिंग हो रही है तो फिर टाइम वेरिएंट है. अगर सिर्फ डिले आ रहा है और मूवमेंट हो रही है तो स्केलिंग हो रहा है. Right, so basically a system is time invariant if you say that if, let's say you send in an input xn and it gives you output yn, which is in this case s applied on xn. Yes, the question is what happens if you send in a shifted version of the input. I have discussed this before, right? Let's say if you say I sent in this input at t equal to 0 and the output was a triangle that started at t equal to 5, yeah, and if you shift this input so that it's starting at t equal to 1 now, does the output look exactly the same as it was before except for one change only? What is that? Same amount of shift, थोड़ा सा यानी उतना ही जितना ये हुआ. So now it should start at, yes, the input moved by 1 unit, no other change in the input, then the output should move by that amount only, no other change. अगर कुछ एक कोई छोटा सा एलिमेंट इधर आ गया या इसका टोटल मैग्नीट्यूड कम हो गया या इवन जो अमाउंट ऑफ शिफ्ट है वो कुछ और आ रहा है, in all those cases the system's behavior is time dependent. It's time varying system. Same input है, given depending on when you give that input the system behaves differently. Yes, that's the time. Or I give you this example again कि वो friend people are highly non-linear है, हाँ बिल्कुल, right? So sorry, time varying है. So mathematically how do we write that here? Basically we say okay, this is what happens if you send in xn minus n. Yeah, of course the output is s operating on xn minus n, that's fine, but the question we really want to ask is this: is this the same as shifting the previous guy like this or not? Is it the same or not? So how do you test this now? Again, this one has two steps basically. First you pass xn through here, okay? Once you have passed this, write it its delayed version, वो भी लिख ले, right? Pass the input through the system, get the output and write the delayed version of the output. Input को नहीं छेड़ा हमने, ठीक है? Let's say the output was cosine n, yeah, then the delayed version of the output will be cosine n minus n. Yeah, don't look at the input in this case. So write the delayed version, keep it with you, जो भी आया वो, ठीक है? Keep it with you. Second step, pass a delayed version of the input now. पहले क्या किया आपने? Pass the input, get the output and the delayed version of the output. Next is pass the delayed version of the input. Whatever you get, ask yourself, can I show that these are equal? Okay, if you cannot show that, then the system is time varying. Okay, if the two are not equal. सर इसको ये हाँ इसको एग्जाम्पल से इस तरह से कह सकते हैं कि अगर फंक्शन की नेचर पे अगर कोई फर्क पड़ा हो टाइम वेरी करने से तो वो हाँ फिजिकल है तो प्रॉपर्टीज वही चेंज हो रही हैं उसकी बस. है तो वही चीज़, लेकिन sometimes you need to go through these steps to, क्योंकि कई दफ़ा वो होता है. But I'll tell you a very simple trick after this, or maybe I can tell you now. Actually, I'll tell you later. From where you can easily tell if the system is time varying or not. Okay. But for now, वो आप टेस्ट के तौर पे अप्लाई करें ना, but I want you to be able to apply this here now. So let's say the system
is AXN. Is it time invariant or not? Again, I want to see how you test it. I'll do it with you. This one, then next one you do it. Yeah. Step 1, what do? You pass an input through the system. What's the output you get here? In this case, क्या आएगा? AXN. Without going to the next step, what do? Get a delayed version of this. वो क्या आएगा इस केस में? Yes, any delay हम सिर्फ 1 पे नहीं कर रहे, yeah? Now you hold it, reference के तौर पे भी पड़ा हुआ, अभी यूज नहीं हो रहा ये, ठीक है? Now you go here and delay the input by the same amount. अब output क्या आता है यहाँ पे? अभी कंपेयर नहीं कर रहे, सिंपल सवाल है ये, yeah? This is the system. If this system gets xn minus n as input, what will its output be? AX bracket में N. वही है. Right? Now is the time to compare notes. See, are the two the same? कई तो different form में लिखे होंगे लेकिन थोड़ी सी juggling के साथ वो एक form में आ गई, है? इसमें जाए. Okay. So first step, pass the input through the system. ये हो गया AXN. Okay. Clear? तो आउटपुट है ना. ये output है, हाँ. Right? So this is your output. Yes. Write the delayed version of the output. Clear? Yn minus n. This is for reference. It will come in handy later. Okay? है? अच्छा. फिर second step में क्या है? Pass a delayed version of the input. इसको अभी हम नहीं छेड़े. Yeah? Now look at xn minus n. When that goes through this system, same system, तो क्या आउटपुट आएगा? ये आएगा. Now compare these two. इनको नहीं कंपेयर करना, right? इन दो को कंपेयर करना. Are the two same? If they are, then you have shown that the system's behavior is not changing with time. The only thing that changed was a shift in the output. Okay. So now try this with AXN plus B. Time invariant. कौन सा? I changed the system to this, added a B here. Time invariant. System test करेंगे आप. कैसे करेंगे? First step क्या है? So plus B, yes. Get its delayed version. What is the delayed version? Plus B. Now delay the input. Pass that through the system. What do you get? Plus B. Compare. इधर भी प्लस बी लगा दे. हाँ लगा दिया ना ये. इधर No. इधर? नहीं ये तो इनपुट है ना. इनपुट पे नहीं सिस्टम ने लगाना है. सिर्फ डिले. सिस्टम सिस्टम खुद लगाएगा. सिस्टम ने देना ना. So when it passes through the system will give you a B. Right? अच्छा. Let's try this one then. Time variant हो जाएगा. Time invariant. Our thinker says B है. n माइनस n आ जाएगा. टाइम वेरिएंट. Variant. Variant. नहीं एक मिनट. ये देखना पड़ेगा. देखना पड़ेगा. Variant. देख. But you know थोड़े easy cases just to bring home the point, yeah. Actual में थोड़े और complicated, लेकिन if you follow the steps पे सही है. Concept वही है. जी क्या conclusion है? था तो ये नॉन लीनियर तो था ही. अब देखना है ये टाइम वेरिंग है या टाइम इनवेरिएंट. जो इक्वल होते हैं वो इनवेरिएंट. हाँ. इसमें ये सेम आ जाए वो टाइम इनवेरिएंट हो जाए. इनवेरिएंट है. अच्छा आपका वेरिएंट है. हाँ जी. और वोटिंग करा लें. सर एक मिनट सर. Voting में स्टेप्स जाए. चलिए स्टेप्स तो करें ना. पहला स्टेप था क्या होगा? n minus नहीं यहाँ पे ये वाला BN कर दें उसको. xn goes through the system. What do you get? AXN plus bn. You form from here without touching the input. इनपुट को नेक्स्ट स्टेप में आपने छेड़ना है. फर्स्ट में आउटपुट को छेड़ना.
you make yn minus n. What do you get? आगे सर एंड पे वो बी एन माइनस एन N minus n. Yes. Now come to the second stage. तो ये तो वो बन रहा है सर इनवेरिएंट n को वाला क्यों किया वो? Okay. If the function is this, हाँ। function पढ़े yn. So what would be yn minus n? ये गलती मेरी तो मैंने उस वाले को ही डिले किया वो बी के साथ जो है ना नहीं मतलब functions आप पढ़ते हैं ना, f of t पढ़ते हैं. So if t is changed on the left side, यहाँ पे this is changed, then won't it change on all the places it shows up? हो सर गया? लेकिन x n तो फंक्शन है ना, तो xn आपका input है ना. सर अब वही चाहिए. Your output yn equals axn plus bn. Yes, n is a box now. Yeah. So what if I replace n by, let's say, k? What should happen? x of k Plus b क्या n रहेगा? के डमी वेरिएबल है ना, वो तो वेरिएबल है, k हो जाएगा. अच्छा, if I replace it by k plus 3, क्या होगा? a x k plus 3 plus b k रहेगा n रहेगा या k plus 3? ये प्लस 3 k है plus 3 हो जाएगा. So it's saying this n is showing here and here. Yeah. So that's why you are generating the delayed function from here. Acha, you get this. What happens now if you pass x n minus n through this system? क्या आता है जी output? तो ये आता है a x n minus n plus b n b n N. ये हमारे पास आउटपुट आते हैं इस इनपुट को डिले करके yeah. Agreed or no? और ये सेम नहीं है ये n minus n नहीं होगा. नहीं क्यों? हाँ क्यों? क्योंकि सिर्फ n अच्छा सवाल है. सिस्टम में Read the system now. Yeah, the system says if you give me a box, yes, I will do this. I will multiply this box with an a and add b and and to it. Right? अब बॉक्स में रख दें x, पहले आपने xn रखा था, अब बॉक्स में रख दें xn minus n, बाकी को तो कुछ भी नहीं होना. n को कुछ नहीं चाहिए ये वेरिएंट हो गया So now you can see that these two are not equal unless, of course, unless b is 0 b is 0. Yeah. So unless b is 0, in general this is a time varying system. सर अंडरस्टैंडिंग के लिए वो जो y n माइनस n की जो आपने इक्वेशन बनाई है ना उसकी भी एक बॉक्स एनालॉजी यहाँ लिख देता कि पता चल जाए कि इन दोनों में फर्क है क्या. ये वाली हाँ इसकी भी एक बॉक्स एनालॉजी. बॉक्स, इसका बॉक्स इधर से बनेगा. You take yn as your reference and you say okay, y, let's call it triangle, equals a x triangle plus b triangle. Formula pardon. ऐसे ही. Now if I want to create y triangle minus circle, what should I get? A x triangle minus circle plus b triangle minus circle. ऐसे ही होगा. ये है. Yeah. So the two are not equal unless b is 0. So this is a time varying system. Now a shortcut, very simple shortcut. Okay, n is our time index. Yes. If in the output of a system की जो formulation है ना, if the time index shows outside of the input, Yes. कहीं भी वो outside of the input आ जाए अगर, तो system time varying होगा. क्या मतलब मतलब सेलेब्रेट N is a time index. यस Yes, it's showing here through the input, यस but it's also showing without the input. या पिछले सिस्टम दोनों क्या थे? Without the input नहीं आ रहा. तो ये एक shortcut है. It doesn't just apply here, it applies in general. If the time index shows up in your output independent of the signal. Yeah. So xn, that is the input, n is here, that's fine. As long as inside the input, the system will remain time invariant. But if the n index shows outside somewhere,
यहाँ आ जाए n इधर आ जाए n स्क्वायर हो Continuous के जाए, केस में t हो गया फिर उसका t हो मल्टीपल ठीक उसमें है। ऐसे वो फर्क पड़ रहा है। हाँ, फिर आप कह रहे हैं कि it's not just what input you give me, I will also change my behavior based on when you give me that input. That is definition of time varying, isn't it? ऐसे ही है ना? Yes. Saying it's not just the input that's going to matter, it's the time instant at which you give me that input. That's also going to matter now. So यही तो होता है time varying system. उसका behavior different हो जाता है. Yeah. So that's a shortcut to finding the time variance. time variance or time invariance, right? क्यों? बस करें? इसी की प्रदूषण मतलब चलें, बस मैं अगला आपको बता देता हूँ कि हमने नेक्स्ट स्टेप करना है क्या है. वी वोंट डू इट. सो So where did this whole thing start? शुरू कहाँ से हुआ था ये? From a question, right? What was the question? arbitrary. How do you calculate the or tell the output of an arbitrary input, right? From an arbitrary system, yeah? So we restricted ourselves to LTI. Right? So we said, okay, we will talk about arbitrary systems, but they will be LTI systems, and we learn to identify when is a system LTI. Because if you cannot do that, then you cannot apply these tools. The question still remains, of course, what is that? Arbitrary systems से हमने restrict कर लिया to LTI. Yes. Now from arbitrary input, there is a claim that I'm going to make, and that claim is going to come in handy, which is this. Since we are in discrete time for now, I won't actually do that today. We will come back to it next time, but you will remind me of this claim. This is this: any discrete time signal can be written as a sum of scaled and shifted impulses. Impulse mean delta function. Yeah. Discrete time में delta function क्या होता है? Yeah. This is the discrete time delta, जिसको हम impulse भी कहते हैं. Yeah. So now the second thing in our toolbox that's going to help. एक तो हो गया कि हमने अपने आप को LTI पे limit कर दिया to answer that. Second thing that's going to help us is this claim. What is this claim? It's not restricting anything. It's saying any discrete time signal can be written as a sum of scaled and shifted impulses. Okay, so we will come to this next time. We will see how any discrete time signal can actually be written as a sum of scaled and shifted impulses, and then we will send those scales and shifted impulses through the system, LTI system, and we will use LTI properties to get a final formula for this guy. Okay, and that will be the answer. So why are we including every discrete time signal? Because we said the input has to be arbitrary, right? And in the systems we had to restrict ourselves for signals. It seems we are fine. We can handle any signals. Yeah. So वैसे ही आपको समझ आ रहा है ये कैसे है? क्लेम समझ आ रहा है? समझ गया है? अभी नहीं आ रहा, इस पे सोचना घर जाके, राइट? इम्पल्स को अगर हम ड्रॉ करें एक इम्पल्स को, क्या होती है ये वाली डिस्क्रीट टाइम? 0 पर 1 होता है वो. 0 पे 1 है और बाकी जगहों पे 0 है. What would we mean by a scaled version of this? ऊपर नीचे Expand हो जाएगा, वो less हो जाएगा. नहीं, समझ गया. magnitude scaling. So scaled version might be that it's become 2. What would we mean by its shifted version? थोड़ा सा इधर. Yeah, so maybe it happens at t n equals 2, 3, yeah, scaled and now sum them.
sum of scale and shifted impulses. सारे सैंपल्स को आप ऐड कर हाँ तो फिर तो any discrete time signal होगा। सर मगर हमने फेल होते इस हुए पे भी तो आते हैं। देखा ना, है हमने फेल होते हुए भी तो देखा है ना फेल होते लिनियरिटी वाला जो हमने अभी देखा उसके अंदर कुछ इधर लिनियरिटी वाली कोई बात नहीं हो रही, इस पे हम आएंगे, ये सिग्नल की बात हो रही, राइट, दैट विल कम टू दैट। ओके, सो that claim with LTI will then help us develop one of the most powerful results in this field. Yeah, आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला नजर आएगा और that is the whole thing. Okay, वो if you understand उसी के गिर सब कुछ है ये, discrete time की definition, delta function की definition, LTI की definition, all of that is revolving around this thing. Because the curiosity is killing us. What's going to be the output? सर उस नहीं, बात Okay. परसों भी कर तो तुम लो यार, मेरा एक इम्पोर्टेंट सवाल है। अच्छा, करेंगे। सर उस फॉर्मूले से आप स्टॉक मार्केट के सिग्नल्स भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सारे नहीं कर सकते, लेकिन सारे you नहीं, can फिर try. आपको वो फॉर्मूला पता है? नहीं, again ये आपको सिस्टम बिहेवियर निकालना we है। will have to see. देखो एक सिस्टम है, वो इनपुट्स आपने देखी हुई है पहले से, बहुत सारे इनपुट्स है, बिहेवियर तो तुम देख सकते हो। So why do you think आपकी जो बात है ना उसमें एक assumption है, क्या assumption? सर आपको पता है assumption क्या है? हाँ मुझे भी पता तो है। बता जाने नहीं आपको Where is this output going to apply? Which systems? LTI Stock Yeah. markets are highly time varying and highly non-linear. ठीक है? So then what happens? We are able to apply approximations of this. Approximation में हमेशा क्या होता है? Chances होते हैं. Banks still make a lot of money. ऐसा नहीं है कि आप long term prediction नहीं कर सकते तो बैंक चल नहीं रहे, चल रहे हैं ना? They invest in many shares, in many properties, sell them, businesses में सब कुछ. So on a reasonable scale, the approximation is quite reasonable. प्रॉब्लम कहाँ आता है कि आम बंदा उसमें जो लॉसेस का चांस होता है ना वो आम बंदा हैंडल नहीं कर सकता। बैंक थ्रू इंश्योरेंस प्लान्स, हेज फंड्स उसको प्रोटेक्शन मिलती रहती है और जब नहीं मिलती तब क्या होता है, हुकूमत से बेल आउट है, राइट। सो आम बंदा ये करेगा ना वो उसके साथ, तो अगेन वी कैन यस बट थ्रू एन अप्रॉक्सीमेशन। जितना हाईली नॉन लीनियर, हाईली टाइम वेरिंग होगा उतनी ये सोल्यूशन, अगर सिस्टम इज कम्प्लीटली LTI द आंसर विल बी स्पॉट ऑन, क्लियर आंसर होगा। अच्छा, उसमें भी खराबी हो सकती है, कैसे? सिस्टम इज कम्प्लीटली LTI फाइन, बट यू आर नॉट एबल टू मेजर द होल इनपुट करेक्टली और द behavior of the system correctly because there are some noise terms entering, some uncertainties in your calculation. कुछ measurement में थोड़ी बहुत खराबियाँ तो होती हैं ना हमेशा, फिजिक्स के जो आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, so they will also lead to some uncertainties, but the bigger uncertainties or issues will come from the non-linearity, time variance, और एक और चीज़ भी है उसमें। शुरू में मैंने बताया था जब सिग्नल क्लासिफिकेशन हमने की थी, वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस रैंडम signals. Yes, this course, a lot of what we do is limited to in a graduate course which I have taught in Sweden, we extend this thing to non-deterministic systems. वो स्टॉक मार्केट फिर नॉन लीनियर, टाइम वेरिंग एंड नॉन डिटरमिनिस्टिक, इसीलिए तो इतना आसान नहीं पैसा बना, ठीक। बट अगेन दोज वो कोर्स आप समझ नहीं सकते अगर आप ये नहीं पढ़ेंगे। आई बिल्ड ऑन दिस टू ऐड randomness into the process and then try to rewrite this for a random signal. Yeah, again जब randomness आएगी तो approximation और फिर random होती जाएगी, तो आप expected value बता सकते हैं, on average you may win this much, पर expected value का क्या मसला होता है कि from time to time you will lose a lot also, क्या आप वो हैंडल कर सकते हैं, मसला ये है वो वाला लॉस बैंक्स के इन्वेस्टमेंट के पैसे लॉस चलिए मार्केट गिर जाए।